We can start now? Yes, sir, you can start now. So good morning to everyone. I hope you have a nice day today. Today we are here to understand on a very important topic of our life, that is anger management. So when we start a session, we normally need to know each other, and your team has already introduced me, but then I see a lot of people who are here, but the screen is off. Maybe they are listening to me. So I want to know from the participants, how are you today? You can write in the chat box, or you can reply to me, no problem. Yes, Mr. Negi, I can see your camera. How are you today? Your mic is off. Anyone from the participants who can answer, how angry are you today, or how are you today? Okay, Ramajendra Fernandez. Okay, I see the thumbs up, so it means you are happy. Okay, good. The point of asking today to you is how angry are you today is to know, because every day in our life, we tend to be happy or we tend to be angry. And we know that it's part of our life. And we always try to control our anger. And that's the session today, is that how we can control the urge of anger, because we normally know that anger is always hostile in nature. It creates problem for people. So today we will understand how we can control anger, why we should control anger, and how we can use it effectively. That also we will understand, because anger itself can be helpful sometimes. So starting this, welcoming you to the session once again, and I'd like to start with a small boy's life, an angry boy's story. A boy always used to be angry, and he never felt that anger can be a problem. But then once in a while he used to be angry. His parents normally used to tell him that you shouldn't be angry in your life, but then he did not listen to his parents, and the result was that he never got any friends in the life. When he never got his friends in the life, he was always alone, because he was angry. Whenever someone used to talk to him, he used to get angry, and people used to run away from him. So he was always alone in his life. When he grew up, he was not able to get friends. And then when there was a time when he wanted, his parents wanted him to get married. But then nobody was ready to marry to him, because he was a very angry person. So he was not able to even get married, because girls used to fear from him that he is a very angry person. So I really could not marry him. That's what the girls used to think. And then, as he did not have any marriage, he did not have any child. As he did not have any child, he had to die alone, because there was no child, there was no wife, so he had to die alone. So from this small story of a person who used to be very angry, we learn from this story that anger actually drives away people from us. We really should learn that if we want people to
come to us, talk to us, anger can be a big hindrance. We should know that anger actually drives away very good people from us. So we should always try to control anger in our life. And what is anger according to you? Now, I know there are many definitions of anger. So if people who are seeing this, I'd like to ask from participants, what is anger according to you? Any participant would care to write anything in the chat box or say, what is anger according to you? Yes, Anshulji, I see your camera. Okay, I'll move ahead because it seems that people really like to listen. So there are different things which we can call anger. Anger is like emotion towards someone or something not abiding to your expectations. We have different expectations in our life, and in these expectations, not all expectations are fulfilled. So when our expectations are not fulfilled in our life, we really get angry. So that can be one of the definition of anger. Second is response to the unwanted actions of another person who is perceived to be disrespectful, demeaning, threatening, or neglectful to you. So anger always is with respect to yourself. When we say anger, it means someone is either hurting us, threatening us, being disrespectful to us, or neglecting us. Whenever these things happen in our life, we become angry. And when we become angry, then there are some after side effects. We'll see to it later. An emotion. What is anger? Anger is an emotion towards something which you don't really like. So if you don't like something and if still it's happening, you become angry. That's what we call anger normally in general terms. And the last is, as the first thing, that when things are not happening as per your expectation, you become angry. So that's what anger is. Not becoming really happy, not becoming happy to things which are happening around you, and you become angry. Now, let's understand there are different types of anger. The first type of anger, which is passive aggression. Now, when we say passive aggression, the word itself shows passive. Passive means it is not active. And when we say passive, it means more introvert. जहाँ पे हम हमारे feelings नहीं दिखा पाते हैं, that's what we call a passive or introvert person. So first type of anger which we are talking about here is passive aggression, जहाँ पे आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है और आप कुछ उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. So that's passive aggression. Now, so this is a situation where you can't do much. You can't do much when some people are scolding on you, when some people are angry with you, and you can't do much. So that's the situation. और ये situation हमारे साथ काफी जगह होती है. Can anyone guess कहाँ पे हो सकती है ऐसी situation where you can't do much if people are angry on you or you are angry on people? When you are interacting with your superiors, with the authority. Yes, exactly. So the boss. If you are angry on the boss, or if the boss is angry on you, you can't do much. You have to listen to him. So that's a good thing. Yes. Any other situation? Sometimes the authority, like the government authority, another thing, cops is there, you can't do much. Yes, powerful people. Powerful people, yes. Customers. Yes, customer also.
If customers are angry on you, or if you are angry on customers, still you have to keep your cool. You can't do much, and you have to be in a passive aggression mode. Parents, sometimes there's a misunderstanding, and then either parents are angry on you or you are angry on parents. Whatever is the case, you can't do anything. You have to live with that situation, find a solution. You have to listen. When your parents are angry on you, you just listen, because you can't really be very angry with your parents. So this is a situation where you have to be in a passive aggression mode. Wife, when wife is angry with you, or when you are angry with your wife, you can't do anything. You have to be in a passive aggression mode. If you become into a different mode, then the life goes in the different mode. So when you're facing an anger situation with your wife, you have to be in passive aggression mode. Anything else which you can think of? Okay, so also people, if you talk about government authorities that if they're angry, yes, we need to listen to them. We cannot be angry on them. So that is the first type of anger, passive aggression. Now let's see a second type of thing, that is open aggression. Open aggression is you show that you are angry. When you show that you are angry, now where are the situations where you can show that you are angry? And in this case, you can shout on people and you can do things to people. So where do you think you can do all this? Any idea? Everyone is listening, but I don't know really, are they really listening or not? Yes, people who are weaker to. Sir, you can Yeah, show Ashaji, your please anger go to ahead. the weaker ones. Hello. You can show your Broken anger voice, on the but weaker really not person. clear. Okay. Maybe there's a network problem. We'll move ahead. When we have an open aggression situation, when you can shout and do things, now this is particularly possible in case of kids. You can shout at kids. You can do. Excuse me, sir. You can beat kids. And Sir, your voice is breaking a lot. Beat kids very badly. So that's an open aggression. Excuse me, sir. So your voice is breaking. Sir, your voice is breaking a lot. Hello. So in case of neighbors, Sir, your voice is breaking a lot. in case of neighbors, you can be angry because there you don't have anything much to care about. Junior colleagues, you can be angry on junior colleagues. You cannot be angry on boss. You cannot be angry on senior colleagues, but you can always be angry on junior colleagues. You can be angry on friends. You can shout on friends. You can show your open aggression on friends, but either you can afford to shout to them because they will always, they will not retaliate. They're always welcoming you in nature, your friends. So there you can show your open aggression. Strangers. Sometimes when we go out and we are on the bike or in the vehicle, and if some stranger happens to brush their vehicle along with us, and we get angry, and you see people fighting on the street. आप देखते हैं जब कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो दोनों स्ट्रेंजर्स होते हैं और दोनों का एंगर का जो लेवल होता है वो बहुत हाई होता है. तो उस केस में आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत गुस्से में होते हैं और झगड़ना शुरू कर देते हैं. तो हम ये देखते हैं कि स्ट्रेंजर्स के साथ झगड़ना हम सोच सकते हैं कि हाँ क्या कर लेगा वो.
So we are always angry with strangers. We do effort to be angry with strangers. So these are some examples of open aggression type of anger. Now let's see a new type of anger, that is assertive anger. Now this is supposed to be the best type of anger which you can have. Now, why is this the best type of anger? Because you are understanding your mistake and you can improve upon it, and you want to improve upon it. So this is a preferable type of anger which people say, which doctors say, that you should have an assertive type of anger, because yes, you are angry because you are understanding that it's your mistake and you want to improve upon it. So you're not angry on the opposite person, you're angry on yourself that you have made a mistake and now you want to improve upon it. So that's assertive anger, understanding your mistake and you want to improve upon it. Now, where do you see this type of thing in society? Just a second, I'll be back with the screen. It seems to be a network issue here. Yes, sir, there is a network issue. You will have to restart again. I hope you've been able to listen to me till now. Yes, sir, very Yes, much. sir. Yes. Now it's perfect. Yes, Now sir. it's perfect. Okay, so now we can continue with this. Right. So assertive anger is understanding your mistake and you want to improve upon it. That's what assertive anger is. Now, where do you find these type of situations? Can anyone guess? Friends, Yes, friends, family. family, yes. So in fact, in assertive anger, it's up to you to decide that where you want to be assertively angry. And this can be anyone, anytime, anywhere. Because here you choose that you don't want to be angry on the opposite person, but you want to be angry on yourself. So this can be anyone, anytime, anywhere. And you know, sometimes people are angry with God. किसी को ऐसा लगता है भगवान ने मुझे ही सब दुख क्यों दे दिए, तो भगवान पे लोग गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं. Imagine. But then here also we don't need to be angry on God, we have to be angry on our own self. Because when we are, जब हम दुखी होते हैं तो वो दुख का कारण कभी भगवान नहीं होता है, वो दुख का कारण हमारे कर्म ही होते हैं. So when we understand this philosophy of karma, we will never be angry on God. We'll always be thankful to God. So that's what assertive anger is. So we need to understand that anger hurts most to whom. Now for this, I would like to tell you a small story. There was a serpent serpent is जो नाग होता है, he used to live in a forest and he used to be very angry. And when you see a snake or a serpent, he normally looks angry. So this angry serpent used to roam in the forest, and once he went into a small building which was built in the forest. When the serpent entered that building in the forest, he saw a mirror. Now serpent has never saw a mirror. So what does he do? He sees his own reflection in the mirror. When he sees his own reflection in the mirror, he starts getting angry on his own self. और वो जैसे वो जो जब सांप डसता है तो वो आईने में अपनी परछाई देख के वो अपने आप को डसना शुरू हो जाता है.
Now just imagine, अगर आप अपने आप को मारना शुरू करेंगे तो सबसे ज्यादा किसको हर्ट होगा? आप अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं. So this serpent starts hurting himself, but then when nothing happens, he understands that it is just my reflection, and he goes ahead. जब वो आगे जाता है तो वो एक सॉ को देखता है. सॉ जो लकड़ा काटने का होता है ना, that saw, he sees that saw in that building, and then जैसे ही वो सॉ के पास से जा रहा होता है, now saw was very, वो बहुत ही शार्प था. तो उसका जो सर्पेंट का जो बॉडी है वो सॉ से थोड़ा सा घिसता है और उसको लगता है. जैसे उसे लगता है, he again gets angry and वो सॉ को मारना शुरू कर देता है, वो सॉ को काटना शुरू करता है. बट देन सॉ वाज वेरी शार्प इन नेचर. तो सॉ को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो सर्पेंट है वही, उसी को, उसके मुंह में वो सॉ लगना शुरू हो जाता है और उसको he starts getting hurting himself. Now he gets so angry कि आप देखेंगे जब भी कोई सर्पेंट होता है या कोबरा होता है, वो क्या करता है? अपने प्रे को लपेटना शुरू कर देता है. अगर उसे मारना है तो उसे वो लपेटना शुरू कर देता है. So this serpent, what does he do? He starts getting entangled with the saw, trying to kill the saw. Now he doesn't know that saw does not have any life, but he thinks that saw has hurted me, so now I am going to hurt the saw. So ultimately serpent saw के आसपास लपेटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन saw इतना शार्प था कि वो serpent को काटना शुरू हो जाता है. It was so sharp कि serpent के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. Now just imagine serpent trying to kill the saw and saw kills the serpent. So the moral of this story is anger hurts mostly to the person who is actually doing the anger. अगर आप किसी पे क्रोध करते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको ही होती है, न कि सामने वाले को तो बाद में तकलीफ होने वाली है या होने वाली है भी नहीं, because he doesn't care for you, he doesn't care what you're talking about. He just sees that this person is very mad with anger, so let him speak whatever he wants to speak. So सबसे ज्यादा तकलीफ अगर आप गुस्सा करते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपको ही होती. That's what we learn from this story. So what are the results of anger? Now you can see on the screen the results of the anger is fight. Here we see one person and being angry on another person, and that results into a fight, and then fights result into destroying relationships. So these are the results of anger. One person trying to get hold of another person, shouting at each other, fighting with each other. Fighting then turns physical. First of all, you start, when we talk about anger, we first of all start talking to each other in a very forceful way. तो पहले जबान लड़ती है, फिर हाथ लड़ते हैं, फिर पांव लड़ते हैं, फिर एक पूरा का पूरा एक दोनों एक साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं. So that's the result of anger. Now, if you are being angry with your wife, this is what happens. You can see on the screen. आपको हाथ जोड़ के माफी ही मांगनी पड़ती है, because you cannot, really compromise with your wife, because we all really need to live with them for the full life. And we see 99% situations where you are fighting with your wife, you have to say sorry. So instead of saying sorry, it's best that you don't be angry with them. That's the best solution. So if you really don't want to say sorry so many times, you always need to control your anger. So that's what happens when you are angry with your wife. And here we see two ladies shouting at each other, fighting with each other, angry with each other. Now what does this happen? When two ladies are fighting with each other, they don't break their arms or legs like men, but they break houses. अगर दो माता एक साथ लड़ती हैं तो वो एक दूसरे के हाथ पांव नहीं तोड़ती, लेकिन पूरा घर तोड़ देती है.
because they start living in different homes. So this is the result of anger, that even the houses are destroyed. A peaceful home is destroyed because of a very simple thing which you can control, that is anger. So we should always try to avoid anger. आगे देखते हैं क्या है. So now let's understand what is the origin of anger. Now, in order to understand what is origin of anger, I would like to tell you a story of a monk. One monk who wanted to meditate under a tree was sitting under a tree, but then it was in the forest, but still he saw a lot of animals creating noises. So he thought that this place is not good for meditation. मुझे कहीं और जाना चाहिए, where I can get a peaceful environment and I can have a good meditation. तो वो क्या करता है, वो जंगल के अंदर ही एक तालाब होता है और वो तालाब में एक बोट में बैठता है, and he takes the boat in the middle of the river. When he takes the boat in the middle of the river, there he finds little peace. क्योंकि तालाब के बीच में तो कोई आके उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो वो सोचता है कि now this is a good place where I can sit and do some meditation. When he sits there and starts his meditation, he feels the bliss. उसे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता. Now I have a very peaceful environment. He keeps meditating for 1 hour without any disturbance. And then he decides कि मैं यहाँ पे एंकर डाल देता हूँ ये बोट का, ताकि मैं यहाँ पे बैठ के आराम से मेरा मेडिटेशन कर सकता हूँ. Now when he puts the anchor there, in the next 15 minutes he was meditating with his eyes closed. वो अपनी आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रहा था. 15 मिनट के अंदर ही, 1 घंटा तो मेडिटेशन अच्छा हो गया, लेकिन 15 मिनट के अंदर ही what he hears, because his eyes were closed, so what he feels is कि उसकी बोट के साथ कोई दूसरी बोट टकरा रही है, कुछ टकरा रहा है उसकी बोट के साथ. Now he did not want to lose his patience, lose his meditation, so he was still there. कोई आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन उसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बोट के साथ कुछ दूसरा बोट टकरा रही है, तो वो फिर भी कंट्रोल कर रहा है. एक बार हुआ, उसने कंट्रोल किया, कुछ नहीं बोला, he was still in his meditation, लेकिन वो डिस्टर्ब हो गया था. 15 मिनट बाद फिर से उसकी बोट के साथ कुछ टकराता है, and he feels कि अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन then he thinks कि नहीं, अगर मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो मेरा मेडिटेशन ब्रेक हो जाएगा. So still continues his meditation. 5 मिनट बाद फिर से वो बोट के साथ कुछ टकराता है और उसको ऐसा लगता है कोई दूसरी बोट है जो मुझसे टकरा रही है और मुझे डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है. कोई दूसरी बोट में बैठा है जो मेरा मेडिटेशन भंग करना चाहता है और मुझे डिस्टर्ब करना चाहता है. Now he gets angry. Now when he gets angry, his facial expressions change. उसका जो मुख कमल था, पहले एकदम ब्लिस में था, एकदम शांत आकार में था, एकदम सुकून में था, अब वो गुस्से होना शुरू हो जाता है. और जैसे उसके हाव भाव चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उसकी आंखें लाल होना शुरू हो जाती है, उसके कान से एकदम धुआं निकलना शुरू हो जाता है, बिकॉज ही इज वेरी एंग्री. ही इज वेरी एंग्री. उसे ऐसा लगता है कि मैं जिसको देखूंगा भस्म कर दूंगा. और जैसे ही अपने आंखें खोलता है, वो सामने देखता है कि बोट तो है जो मेरी बोट को टच कर रही है, लेकिन उस बोट में कोई नहीं है. वो ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बोट में कोई है ही नहीं. तो वो देखता है कि ये जो बोट है वो एंकर बिना की बोट है, जो तालाब में ऐसे ही किसी ने छोड़ दी है और मुझे ये बोट से टकरा रही है क्योंकि वो बीच में आके खड़ी हो गई है. और इट्स यानी उसमें उस बोट का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, उस बोट में कोई एंकर नहीं लगा है. सो बाय द विंड this boat is actually dashing with the boat where the monk is sitting. So he suddenly felt
the alignment in himself. उसे suddenly यह पता चला कि यह बोट तो कुछ नहीं कर रही है, यह बोट तो सिर्फ हवा के कारण मेरी बोट को टकरा रही है, तो उसमें मुझे गुस्सा होने की कोई जरूरत ही नहीं है, और बोट का कोई दोष ही नहीं है, दोष किसका है? मेरा है। मेरे अंदर जो एंगर भरा हुआ था, जो क्रोध भरा हुआ, वो बाहर आ रहा है। There is nothing wrong outside. What is wrong is inside. अंदर है जो एंगर है, जो मेरे बाहर आना शुरू हो रहा है। So origin of anger is not always outside. The origin of anger is inside us. हमारे अंदर कोई गुस्सा होने की जो प्रोपेंसिटी होती है, वही एंग्री फीलिंग हमें आती है। हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, कर सकता अगर हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। हम एंग्री तभी होंगे जब हम खुद एंग्री होना चाहते हैं। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब हमें कोई भी एंग्री नहीं कर सकता। Results of anger. Now you see this, you can see this picture. Can you guess who is this lady? Anyone who can guess who is this lady? Draupadi. Draupadi, yes. And who is this gentleman? Duryodhan. Duryodhan, yeah. So हम देखते हैं महाभारत का युद्ध क्यों हुआ. There were different reasons for Mahabharat, and this is one of the reason of Mahabharat. जब दुर्योधन पांडवों के राजमहल में आता है, तो कहीं पे वो देखते हैं पानी है, जब लेकिन उधर चलना शुरू करता है तो वहां देखते हैं पानी नहीं है, वहां पे तो प्लेटफॉर्म ही है जहाँ पे वो चल सकता है, लेकिन उसको ऐसे बनाया गया था कि जैसे पानी लग रहा था। और एक जगह पे जहाँ पे वो ऐसा लगता है कि ये तो चलने का जगह है, प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे वो चलना चाहता है, वो पानी में गिर जाता है। जैसे वो पानी में गिरता है, उसे सामने द्रौपदी दिखती है, और द्रौपदी देखकर हंसती है उसे, और वो क्या कहती है उसे? अंधे का पुत्र अंधा। Now imagine these 4 words which Draupadi is telling him, अंधे का पुत्र अंधा। और ये 4 शब्द सुन के दुर्योधन उस दिन यह प्रण लेता है कि मैं अब ये मेरे अपमान का बदला द्रौपदी से लूंगा। And then he starts planning all his dirty plans कि मैं कैसे पांडवों को बुलाऊं, I'll start gambling with them, and I'll try to win everything from them. So what is the result of anger? You can see here the result of anger is कि पूरा महाभारत का युद्ध हुआ। और इस महाभारत के युद्ध में क्या मिला, आप सोच सकते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि महाभारत के युद्ध में कौन विजयी था? कौरव थे कि पांडव थे? पांडव थे। महाभारत के युद्ध में विजय कौन बना? कौरव थे? पांडव 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 5 पांडव। पांडव, it was Pandavas. पांडव विजयी हुए थे महाभारत के युद्ध में। Just a second, I'll again reshare my screen क्योंकि नेटवर्क इशू है। Just give me 20 seconds. Just give me 1 minute. There is a Okay, sir. network issue here. Okay, sir, no problem.
Are you able to see the screen? Yes, sir. Okay, let's go ahead. Now you can see in this picture result of anger. जब महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए और उसके सबसे प्रिय पुत्र दुर्योधन को किसने मारा था? भीम ने। जब भीम उनको मिलने जाता है युद्ध के बाद, तो भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि आप मत जाइए, पहले आपके पुतले को भेजिए। और जैसे ही वो पुतला धृतराष्ट्र को दिखता है, धृतराष्ट्र कैनॉट सी, सो ही जस्ट एम्ब्रेसिंग द स्टैच्यू एंड धृतराष्ट्र के पास 10,000 हाथियों का दल था। एक्सक्यूज मी सर, तो एक्सक्यूज मी सर, आपका एक्चुअली पीपीटी क्लोज हुआ है। प्लीज वापस शेयर कर देंगे सर। ओके, just a second, I am working on it. ओके सर। आवाज नहीं आ रही है। अब दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? Yes, sir. ओके, यस सर। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि
जब धृतराष्ट्र भीम को मिलने जाता है तो भीम को जब उनको गले लगाता है तो उसे इतना गुस्सा था कि इसने मेरे अपने बेटे को मार दिया, तो वो पूरा का पूरा जो पुतला है वह चकनाचूर कर देता है. Really, turns that statue into pieces. And that was his anger that he showed after Mahabharata, after the war of Mahabharata. Now, so these are the results of anger, that you even cannot spare your relative, your brother's son, if you are really angry. That's what Dhritarashtra did when he was angry, when he was trying to kill Bhim by embracing him. So this is the result of anger. You cannot even spare your relative, your brother's son on this. So what is the result of anger? Now, result of anger is always destruction, destruction, and destruction. Now, why it is destruction, destruction, and destruction? Because we know that becoming angry is not our job. It is job of Lord Shiva. हम देखते हैं ना कि भाई, हम बोलते हैं ना कि भाई कि भगवान शिव का जब तीसरा नेत्र खुलेगा तब सब कुछ जल जाएगा, तहस नहस हो जाएगा. So that's what happens when you become angry. When you become angry, then you destroy relationships, you destroy homes, you destroy people, you destroy friends, you destroy families, you destroy relatives. Everything is destroyed when you become angry. When you become angry. So, that's what is a result of anger. Okay, now we have one more story which is very relevant to us. There was one woman which had a big problem, and she always used to be very angry. She used to be angry with her husband. She used to be angry with her mother-in-law. She used to be angry with everyone who comes across the whole day. And then she sometimes she used to turn into that assertive anger which we talked about earlier. She used to know that it's her mistake and she should be actually angry on herself, not on others. So one day, one monk came to her house and she actually begged that monk that I have this problem of anger. मैं हमेशा गुस्से हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा नहीं होना फिर भी मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं लोगों को अनाप शनाप बोल देती हूँ, और फिर 2 मिनट के बाद जब गुस्सा पूरा होता है तब मुझे पता चलता है कि मैंने क्या गलत कर दिया. तो आप मुझे इसका सॉल्यूशन दीजिए. तो जैसे वो संत ये सुनते हैं कि इसको गुस्से का प्रॉब्लम है, वो अपने थैले में से 2-3 बॉटल निकालते हैं. वो छोटी सी बॉटल थी और उसमें से एक ग्रीन कलर की बॉटल थी. वो ग्रीन कलर की बॉटल उसे देते हैं और कहते हैं कि अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको इस बॉटल में से, ये ग्रीन कलर का जो बॉटल है इसमें से दवाई है, ये दवाई का एक टीपा आपके मुंह में डालना है और आपको फिर कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि वो दवाई तब काम करेगी जब आप उसको मुंह में धारण करेंगे, जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं हो जाता. तो आपको ये दवाई रखनी है, अपने मुंह में कुछ बोलना नहीं है और इस दवाई को अपना काम करने देना. वो जो लेडी थी वो बोलती है ठीक है, आप मुझे दे दीजिए दवाई. अब अगली बार से फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वो लेडी को जब भी गुस्सा आता था वो अपने बॉटल में से वो दवाई का टीपा मुंह में डाल देती थी. एंड इट वाज it had its own peculiar medicine type taste. तो वो जैसे उसको पता चलता, वो दवाई डालती थी मुंह में तो उसको याद आता था कि अभी मुझे कुछ बोलना नहीं है, अब मुझे शांत रहना है, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूंगी तो दवाई काम नहीं करेगी. तो वो ऐसे ही करती रही. एक हफ्ते के बाद वो नोटिस करती है कि जब भी मुझे कोई गुस्सा आता है और मैं दवाई लेती हूँ तो मुझे गुस्सा उतर जाता है मेरा, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ क्योंकि मैं चुप रहती हूँ. धीरे धीरे यह वो अपनाना शुरू करती है और 1 महीने के अंदर ऐसा होता है कि within 1 month she can control her anger. So what happens is that whenever she is angry, she puts that point on the tongue and she remains calm. When she remains calm, there is no anger, there is no speaking, there is no talking, there is no blasting on anyone. So
automatically the anger comes down. When the anger comes down, there is no fighting. And when there is no fighting, it's done. 1 महीने बाद वो संत फिर से उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, अब एंगर कंट्रोल में है कि नहीं। तो वह जो माता जी हैं, वो जो लेडी हैं, वो उनके चरणों में गिर जाती और कहती हैं, बाबा जी आपने जो मुझे ये दवाई दी है, ऐसी 10 बोतल और दे दीजिए मुझे, क्योंकि अभी तो सिर्फ 1 ही महीना है, मुझे तो काफी टाइम ये लेती रहनी पड़ेगी, क्योंकि अब 1 महीने से मैं अपना एंगर कंट्रोल कर पा रही हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मुझे एंगर होता है, जब भी मुझे गुस्सा आता है, तो मैं ये दवाई का एक टिपा अपने मुंह में रखती हूँ और मेरा एंगर गायब हो जाता है। वो संत हंसने लगता है उसके ऊपर और वो कहता है कि बेटा ये दवाई कुछ नहीं है, ये सिर्फ पिपरमेंट का पानी है। इस पिपरमेंट के पानी में आप पिपरमेंट का पानी अपने मुंह में रख रहे थे, एक्चुअली ये पिपरमेंट काम नहीं कर रहा है, आप जो चुप रहते हैं वह काम कर रहा है। आप जब भी गुस्से होते हैं और आपको बोलने की इच्छा होती है, तो ये पिपरमेंट की वजह से आप बोलती नहीं है। जब बोलती नहीं है तो कोई झगड़ा नहीं होता है, कोई झगड़ा नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वह चीज काम कर रही है, न कि ये दवाई। यह सुन के वो जो लेडी है वो अचंभित रह जाती, वो सोचती है कि इतना सिंपल सॉल्यूशन तो मैं कर नहीं पा रही थी। वो फिर से उस संत के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि बाबा जी आपने यह समझा के मुझे पर बहुत बड़ा एहसान किया है कि ऐसे ही मैं अपना एंगर कंट्रोल कर सकती हूँ। तो अगली बार से मुझे अब ये दवाई की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल यही फॉर्मूला अपनाऊंगी कि जब भी मुझे कोई गुस्सा आता है मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी, मैं चुप रहूंगी। अगर मैं चुप रहूंगी तो कोई झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. From that time onwards, she always used to be calm when there is anger on her. And as she was calm, there was no damage, there was no talking, there was no blasting around, so everything was under control. So that is Lord Buddha's solution to anger, that when you feel angry, you always should be calm. You don't need to talk. And when you don't talk, everything is under control. So we should always try to implement this in our life if you want to be, if you don't want to be an angry person. Screen sharing is an issue. Let me share the screen once again. Just a second. Sir, should we share the screen? I'm able to hear the broken voice. Sir, can we do the sharing? Okay. Now we're back on track. So how do people see angry persons? हमें ये भी समझना जरूरी है कि अगर आप गुस्से वाले व्यक्ति हैं तो लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं. That we need to understand. So how do people see angry people? They are not talked too much out of fear. लोग आपसे बात करने में डरेंगे क्योंकि आप तो गुस्से वाले व्यक्ति हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कभी भी गुस्सा हो सकते हैं, तो लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे अगर आपको गुस्सा आता है. You don't get chance to talk in public forums out of fear. आप अगर कोई पब्लिक फोरम है तो आपको बोलने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि पता है कि ये तो गुस्से हो जाते हैं. कभी भी अगर मंच पे गुस्से हो गए तो क्या होगा? They're not friendly. They're not seen as a friendly person when you get angry very frequently. They are supposed to be not communicative. क्योंकि अगर कोई गुस्सा होता है तो
anger is not a form of communication, not a form of good communication. It is always a form of bad communication. So they are not seen to be a communicative person. So if you want to work with a team, you always need to keep your cool. अगर आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो हमेशा आपका टेम्परेचर हमेशा लो रहना चाहिए. अगर आप हाई टेम्परेचर में रहेंगे तो लोग आपके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे. They are always thought to be unpredictable, always ready to fight or argue. People are labeled कि ये झगड़ालू व्यक्ति है, इसका कुछ पता नहीं, कुछ भी कुछ बोल सकती है, बोल सकता है. So that's how people label you if you are an angry person. And they get every great respect. As we saw that if you are a powerful person, people will respect you. If you are a powerful person and if you are an angry person, people will respect you. But that is all artificial. People will not respect from the heart, but people are only respecting your designation. So that's how respect angry person gets. And they are laughed upon after they are gone. आप अपनी ऑफिस में काम कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे आप बाहर जाने लोग आपके ऊपर हंसना शुरू कर देंगे. If you are an angry person in office. And then there's a good saying which we always should remember, very good saying, small pot gets hot soon. जो धैर्य व्यक्ति होता है, जिसमें धैर्य होता है, वो बहुत ज्यादा जल्दी गुस्से नहीं होता. क्यों? क्योंकि उसके पास धैर्य है. और जो जल्दी गुस्सा हो जाता है, इज जस्ट लाइक अ स्मॉल पॉट. अगर आप लेट्स मी गिव एन एग्जांपल. अगर आपको आपके घर पे 1 कप चाय बनानी है तो आप छोटा तपेली लेंगे, लेकिन आपको पूरी फैमिली के लिए चाय बनानी है तो यू विल टेक अ बिगर वेसल. So a bigger vessel takes big time to get hot, and a small vessel gets very less time to get hot. So when you get hot very easily, it means your pot here is very small. So if you want to be a big pot, you need to learn patience in your life. Now, what is the root cause of anger? So we have covered different types of anger. We have covered what are results of anger. Now let's see what is the root cause of anger. We are all into management industry. So every time there's an audit, there's a non-conformance, and then there's a non-conformance, you talk about root cause. So here we are talking about root cause of anger. Now, what is the root cause of anger? The root cause of anger is I, myself. First, that is the root cause of anger. What is the second thing? Second thing is we expect that people should respect me, people should listen to me. We have all emotional expectations. So, that is the root cause of anger. We ourselves are the root cause of anger. And this is what we see into this modern management today. If you find on internet how to control anger, you say tightly hug or squeeze a pillow or toy. Use your words to tell how you are feeling. Slowly count 10 or sing the ABCs. Take a few slow deep breaths. Now everything this is external in nature. You can see everything is external in nature and not internal. Now let's understand what Bhagavad Gita has to talk about in and about anger. Now here we have Bhagavad Gita shloka. It's Bhagavad Gita chapter 2 slok number 56. What it talks about anger. It says Dukheshu anuvriddhi mana sukheshu vigata spuha vitaraga bhaya krodha sitagi muni uchyate. Lord Krishna is saying, जो तीनों तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है. So क्रोध is the keyword in this shloka. Now what is this teen tap what we are talking about? So here we understand from this definition कि जब दुख होगा तब क्रोध आएगा,
तो जब दुख होगा तभी क्रोध आएगा। कोई सुखी में क्रोध नहीं हो सकता, लेकिन किसी व्यक्ति को, कोई सुखी व्यक्ति को भी अगर कोई दुखी करेगा तो वो क्रोध में आ जाएगा। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस फर्दर? और हमने उसमें श्लोक में देखा 3 ताप होते हैं, जब वो 3 ताप होते हैं तब लोग क्रोधी हो जाते हैं। तो ये 3 ताप कौन से हैं? ये 3 ताप हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्लाइड में दिखा है, दुर्गा देवी ने हमें इस जेल यानी जो भौतिक जगत में कैसे सजा देते हैं। नाउ इस भौतिक जगत को जेल कैसे कहते हैं, उसके लिए हमको एक पूरा अलग क्लास देखना पड़ेगा। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल। लेकिन जो 3 टाइप के दुख हैं जो हमें सताते रहते हैं हमेशा, वो कौन से? वो देखिए आप, एक है आध्यात्मिक, दूसरा है आदि दैविक और तीसरा है आदि भौतिक। ये 3 दुख है जो हमेशा हमें सताते रहते हैं, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली। नाउ व्हाट इज दैट? व्हाट आर दीज 3 दुख वी कैन अंडरस्टैंड हियर? फर्स्ट इज आध्यात्मिक, दैट इज शरीर या मन का दुख। दूसरा है आदि भौतिक, जो बाहर से हमें दुख मिलता है, जो अन्य जीवों में दुख पहुंचाते हैं। वो एक मच्छर भी हो सकता है, वो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपकी बीवी भी हो सकती है, आपका पति भी हो सकता है जो आपको दुखी कर रहा है। और तीसरा है आदि दैविक। आदि दैविक इज नथिंग बट नेचुरल कैलामिटीज, act of God, what we call, but it is actually not act of God, it's all nature. It definitely is driven by God, but then that's what we call it आदि दैविक। तो ये 3 टाइप के दुख हैं जो हमेशा आपको सताते रहते हैं, और जब ये दुख होते हैं तब आपको क्रोध आता है। तो वह श्लोक को अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या था? कीवर्ड्स आसक्ति, भय और क्रोध। आसक्ति का मतलब क्या है? एनीवन कैन tell what is the meaning of asakti? Attachment. Yes, attachment. Asakti means attachment. Now when we say asakti, now this is the cycle of asakti. जब आसक्ति होगी तो भय होगा, और भय होगा तो क्रोध होगा। दुर्योधन को किसके साथ आसक्ति थी? दुर्योधन युवराज बनना चाहता था, और उसको आसक्ति किसके साथ थी? कि वो युवराज बने रहना चाहता था, वो राजा बनना चाहता था। और उसको भय क्या था? उसको भय था कि मेरा राज्य पांडव लेके जाएंगे। इस भय की वजह से उसको हमेशा क्रोध में रहता था कि मैं पांडवों को ऐसे तकलीफ दूं, वैसे तकलीफ दूं। तो आसक्ति, भय एंड क्रोध, दिस इज अ साइकिल ऑफ क्रोध। So here you see in slide, there are so many people who are so much angry on the streets. Now, why are so many people angry on the streets? Why are they not satisfied with whatever they have on their hand? Let's understand that. When we talk about street, हम ये देखते हैं कि जब स्कूटर का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई 4 व्हीलर का एक्सीडेंट होता है, तो क्या होता है? जो 2 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, दोनों लोग बाहर आ जाते हैं और फिर झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे पे गुस्सा होना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आसक्ति क्या है? यहाँ पे आसक्ति ये है कि जो मेरी गाड़ी अब प्रॉब्लम हुआ है, उसका उपयोग मेरा चला गया। दैट्स द आसक्ति दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब भय क्या है? भय ये है कि अभी इसका खर्चा मुझे करना पड़ेगा, मेरी जेब से मेरे को पैसा देना पड़ेगा, और यह पैसा मैं सामने वाले से वसूल करूं, इसीलिए मुझे क्रोध आ रहा है। अगर मुझे खर्चे की चिंता नहीं है, अगर मेरे पास दूसरी गाड़ी है, तो मेरे पास इतना ज्यादा क्रोध नहीं आएगा, बिकॉज आई एम टू बिजी विथ माय ओन वर्क, आई विल नॉट केयर टू फाइट विथ समवन, आई विल जस्ट गो ऑन माय वे। सो उपयोग वो आसक्ति है। अगर मुझे खर्चा करना पड़ेगा, उसका मुझे भय है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खर्चा करूंगा, इसलिए मैं सामने वाले के ऊपर ज्यादा गाली गलौज करता हूँ, ज्यादा झगड़ा करता हूँ, ज्यादा क्रोध करता हूँ, ताकि वह व्यक्ति मुझे पैसा दे दे और मैं अपनी गाड़ी ठीक करवाऊं। ऐसा ही एग्जाम्पल हम हमारे काम में देखते हैं, हमारे व्यापार में देखते हैं। जब हमारे काम में हमको क्रोध आता है, तो उसमें व्हाट इज द आसक्ति? आसक्ति क्या है? काम, हमारे जो वर्क है, हमारा जो जॉब है, उसमें हमें आसक्त होते हैं। और भय क्या है? भय यह है कि बॉस हमसे हमारे ऊपर गुस्सा करेगा, कस्टमर हमारा चला जाएगा, बॉस हमको प्रमोशन नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे? हमारा काम हो, इसके लिए हम दूसरों पे क्रोध करें। हम ये सोचेंगे कि अभी मेरा परफॉर्मेंस अगर ये नहीं पहुंचा, so I'll push other people so that I can match my performance. I'll push people in the team who can really, get things done. So
किसी का गुस्सा हम किसी पे उतारना शुरू कर देंगे। सो आसक्ति क्या है? हमारा काम हो जाए, ये हमारी आसक्ति है। भय क्या है? बॉस हमसे खुश नहीं होगा, कस्टमर हमसे खुश नहीं होगा, दैट्स द भय। एंड इसकी वजह से हमको क्रोध आता है। अब मैं आपको ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमको परफॉर्मेंस नहीं करना है, हमको टारगेट नहीं करना है। नो, वी डेफिनेटली नीड टू परफॉर्म इन वॉट एवर वी आर डूइंग, बट देन दिस इज द साइकिल ऑफ क्रोध विच आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं क्या है। आगे, घर पर अगर कोई विवाद होता है तो क्या होता है? why are we so angry at our homes? उसमें आसक्ति क्या है, भय क्या है और क्रोध क्या है? जो स्वजन है हमारे, हमारी वाइफ, हमारे माता पिता, हमारे पति, वो हमारी आसक्ति है। और भय क्या है? भय यह है कि मेरा पति मुझसे रूठ जाएगा, मेरी पत्नी मुझसे रूठ जाएगी, मेरे माता पिता रूठ जाएंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी, वगैरह वगैरह, ये भय है। अप्रसन्नता, सामने वाले की जो अप्रसन्नता है वो भय है। और इसी की वजह से हमें क्रोध आता है और हम दूसरे लोगों पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स द साइकिल ऑफ क्रोध एट होम। एक और श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में? ध्यायत विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते संजायते काम कामात् काम क्रोध अभिजायते। If you translate this into Hindi, it says इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। So when we say इंद्रिय, now what do we mean by इंद्रिय? It means हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अभी हम आगे देखेंगे क्या है। तो जब हम इच्छाएं शुरू कर देते हैं, हमारे मन में इच्छाएं होना शुरू हो जाती है, इच्छाओं से आसक्ति आती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। That's what Lord is saying here in Bhagavad Gita. So now we are talking, now we are slowly gradually going towards the root cause of krodha. Where does it originate? That's what is given in Bhagavad Gita. So here, इंद्रियों का चिंतन यानी हमारी इच्छाएं, उससे क्या होता है? आसक्ति होती है। आसक्ति से क्या होता है? भय से क्या होता है? क्रोध। सो इंद्रियों का चिंतन का मतलब है वी आर प्लानिंग कि मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, एंड वी गेट अटैच्ड टू इट। व्हेन वी गेट अटैच्ड टू इट, वी फियर कि अगर ये नहीं हुआ तो कस्टमर क्या बोलेगा, बॉस क्या बोलेगा, और फियर ऑफ not achieving the target, fear of not performance, fear of not happening what we have done or what we have thought of generates anger. कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बॉस मुझ पर गुस्सा हो, इससे अच्छा मैं मेरी टीम पे गुस्सा हो जाऊं, उनको पुश करूं, उनसे फटाफट अपना काम निकलवाऊं। And that's what is the origin of anger. Please bear with me because the system is going slow. Okay, let's see, the screen is gone again. Okay, so इंद्रियों का चिंतन की हम बात कर रहे थे। तो इंद्रियों का चिंतन में क्या होता है? हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से भरा हुआ है, और जो हमारा शरीर जो हम देख पाते हैं उसमें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। अब ये 5 ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय क्या है? नेत्र, कान, आंख, जीभ और त्वचा, दीज आर ऑल ज्ञानेंद्रिय, जिससे हमको नॉलेज मिलता है। और कर्मेंद्रिय यानी हम कर्म किससे करते हैं? हाथ, पैर, वाणी, जनेंद्रिय एंड बुद्धा। तो दीज आर ऑल इंद्रियों का क्लासिफिकेशन, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय। So when we talk about management, we talk about input and output. So this is our input of our body, and anger is lashed out by eyes, hands and tongue. आप देख पाते हैं हमेशा कि अगर कभी कोई गुस्सा होता है तो क्या उसमें डिफरेंस क्या होता है? उसमें डिफरेंस ये होता है कि उसकी आंखें लाल हो जाती है, जीभ
उसकी बोलना शुरू हो जाती है, बैड वर्ड्स, अब्यूजिंग, अगर आसपास कोई ऐसा है जिसको आप चांटा मार सकते हैं तो आपके हाथ चलना शुरू हो जाते हैं और आप चांटा मारते हैं किसी को। अगर आपने देखा होगा लोग गुस्से में पाँव भी मारना शुरू कर देते हैं किसी को। सो the inputs for our body is all this कर्मेंद्रियस. Now what's output of the body? And anger is leaked out with tongue and hands. Mainly these are the two common things. या तो हम किसी को, we have seen people जो हाथ में मारना शुरू कर देंगे तो वो हाथ यूज कर रहे हैं, जहां देखा वहां पे पाँव मारना शुरू कर देंगे लोग। हमने देखा है लोग पाँव में लाते मार रहे हैं लोगों को, फॉर सम रीजन, गुस्से हैं, झगड़ा हो रहा है, दे आर सो एंग्री, एंड देन people abusing each other with the tongues. So these are the outputs of anger when we are angry. The touch and tongue and hands are common for input and outputs of anger. ये दोनों चीजों में आप देखेंगे तो टंग एंड हैंड्स आर कॉमन, वो इनपुट के लिए भी काम आएगी, आउटपुट के लिए भी काम आएगी फॉर एंगर. So tongues and hands are controlled by whom? Can anyone say this? Mind. हमारे Mind. शरीर में Mind. माइंड. यस माइंड. माइंड को हम बुद्धि का नाम देते हैं. इट इज एक्चुअली मन. मन के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है. वी टॉक अबाउट, व्हेन वी से माइंड वी टॉक अबाउट बुद्धि. सो मन इज द रूट कॉज ऑफ एंगर, दैट इज originating place of anger. That is the root location of anger. मन जो होता है वहीं से क्रोध का जन्म होता है. So what is the root cause of anger? Root cause of anger is uncontrolled desire. Uncontrolled desires are the root cause of dissatisfaction, and anger is generated due to non-fulfillment of unlimited desires. अब आज की डेट में बताइए ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके की इच्छा ही ना हो? Very difficult. We cannot find a person who says कि मेरी कोई इच्छा नहीं है. हर व्यक्ति की कोई न कोई इच्छा होती है. Someone wants to, excel in sports. Someone wants to excel in studies. Someone wants to excel in job. Some people want to excel in politics. हर व्यक्ति की अलग अलग इच्छा है, और जब वो इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, when you have uncontrollable desires, and when the desires are not fulfilled, you start becoming angry. You start becoming angry on yourself. You start becoming angry on people who are not able to fulfill your desires. और सबसे ज्यादा गुस्सा कहाँ निकलता है? घर पर निकलता है. आप अपने माँ बाप से गुस्से में बात करते हैं, आप अपने बच्चों से गुस्से में बात करते हैं, और आप अपने पत्नी से गुस्से में बात करते हैं, पति से गुस्से में बात करते हैं. So when there is no channel where you can outleash your anger, the only resource is at your home where you can outleash your anger. So these are the root causes and root locations of anger. Now let's come to the main point, how to control anger. हमने ये देखा कि what is anger, results of anger, origin of anger. Now let's see how to control anger. How to control man which generates anger. Now that's the question which we need to ask to ourselves. कि अगर हम क्रोध को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमको उस चीज को कंट्रोल करना पड़ेगा जहां से क्रोध का जन्म हो रहा है, और क्रोध का जन्म कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है. So how do you control man? Now we are not talking about mind, because mind means buddhi, and man is, we don't call it soul because there's no word for man in English. I really try to find it. If you get that word, please tell to me. So how to control man which generates anger? How to control man? Let's see that.
मन कैन बी कंट्रोल्ड बाय लॉजिकल माइंड, मन को बुद्धि ही कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कई बार हम काफी सिचुएशन में कुछ अलग देखते हैं। अब आप इधर देख रहे हैं, एक सिचुएशन में ऐसा है जहां पे मन बुद्धि को लेके जा रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मन और बुद्धि दोनों हेल्दी कंडीशन में है। सो वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन जहां पे मन बुद्धि को हर ले और आप वही कार्य कर रहे हैं जो आपको मन बोल रहा है, ना कि बुद्धि काम कर रही है। आई गिव एन एग्जांपल। आप एकदम हेल्दी पर्सन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सडनली यू आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज। अब सबसे पहले तो डायबिटीज हुआ कैसे? मीठा ज्यादा खाने से डायबिटीज हो गया। मीठा ज्यादा क्यों खाया? अरे भी कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल क्यों नहीं होता है? हमेशा मन होता है मीठा खाने में, इसीलिए डायबिटीज हो गया। तो व्हाट्स हैपनिंग हियर? बुद्धि बोल रही है कि मीठा मत खाओ नहीं तो डायबिटीज हो जाएगा, लेकिन मन इतना हो रहा है कि डायबिटीज हो के ना हो, मीठा खाना है, और अब डायबिटीज हो गया। सो दैट इज वेयर you are destroying your body by following your मन। अगर आप अपने मन को हमेशा फॉलो करेंगे तो आप अपने बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आप अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज मर्डरर्स, क्रिमिनल्स। हर मर्डरर को पता है, हर क्रिमिनल को पता है कि मुझे जेल में जाना पड़ेगा अगर मैं किसी को मारूंगा या मैं चोरी करूंगा या मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन वो अपने मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और वो क्राइम कर बैठता है, एंड देन हिज बॉडी हैज टू बी इन जेल फॉर सो मेनी इयर्स। कहते हैं ना कि मन इच्छा करता है, लेकिन जूते किधर पड़ते हैं? सर पे पड़ते हैं, बुद्धि पे पड़ते हैं जूते। बुद्धि बोलती है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये मन कर रहा है, लेकिन जूते किसको पड़ रहे हैं? सर पे पड़ रहे हैं। So that's what happens when you are not able to control your man. So always the best desirable condition is 50-50 situation. 50 situation, 50% मन का सुने, 50% बुद्धि का सुने, और एक balanced way में चले। I'm not telling you that you should be insensible. You have to be sensible, you have to be emotional, but that has to be in the 50% promotion and 50% with the logical mind which you have. So you should take decisions with 50-50 scenario, 50% emotional, 50% logical. That's the balanced way of life. Now, what is the result or cost of anger? We are all into management, so we need to see what is the cost of anger for us. What are the results of anger for us? If we get angry at the job, what we are done? We are fired. That is the cost of anger. When we are so angry, we break up. There are so many divorces which are happening just because of angry people. They cannot tolerate each other. No, when both the people are angry, there will be a divorce. There will be a breakup. So that is the result or cost of anger. And it is not just breaking relationships. Unmanaged anger can lead to headaches, insomnia, anxiety, depression, digestion problems. It gives you so many physical problems. You can have very bad health if you are an angry person. Now let's see what Bhagavad Gita has to say further for anger and krodh. It says, we are short on time, so I'll just directly read the Hindi translation. क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम होता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य बहुकूप में पुनः गिर जाता है। So you are destroying yourself when you are an angry person. That's what Bhagavad Gita says. तो आप क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति यानी remembrance goes away, and उससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। The mind gets driven away by मन, and then उससे आध्यात्मिक पतन होता है। It means you are destroying yourself if you are an angry person. So let's come to the last question.
how to be free from anger propensity. How will we free ourselves from anger? उसमें भी उसका सॉल्यूशन भी भगवत गीता में है. इट सेज जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है. तो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से दूर क्यों रहना है? विल सी इन द नेक्स्ट लाइफ. जो स्वरूप सिद्ध यानी हमको पता होना चाहिए who am I. Now I cannot talk about who am I because that's a different class altogether. So स्वरूप सिद्ध is who am I. आत्म संयमी is being normal human being. And sansiddhi means here, sansiddhi means satisfied with your own self. संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है. So that person can be free when you are having all these qualities. Now, so समाधान क्या है? क्रोध, भौतिक इच्छा से रहित होना, स्वरूप सिद्धि, आत्म संयमी होना, संसिद्धि के लिए प्रयास करना, और वैसे ही जो संसिद्धि के लिए प्रयास करेगा वह उसके लिए मुक्ति बहुत ही जल्दी रहती है. Now, what's the Vedic wisdom for anger management? Now, these are all practical solutions which we have got from Shastras for you. What are the practical solutions which you can apply in our day-to-day life for anger management? What are these? Always be in humble mood. Always be in thankful mood. मन को जो नियंत्रण कर सके उसको कहते हैं मंत्र. So what we should do? We should chant Vedic mantras daily to cool off your मन and mind. मन बोलेगा मुझे ये खाना, ये पीना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है. माइंड बोलेगा नहीं. माइंड कुछ और बोलेगा. माइंड बोलेगा मुझे ये खर्चा करना है. All that इच्छाएं coming to you every day. If you want to cool them off, Vedic mantras are the solution. Now visualize how do you want to people to remember you after your departure from this. That's what we see. अगर कभी कोई मर जाता है या शरीर छोड़ देता है, तो then we start remembering about him or her. अगर आप एक एंग्री पर्सन होंगे तो लोग क्या सोचेंगे? अच्छा वह मर गया, अभी हमारे पे चिल्लाने वाला कोई नहीं है. So do you really want to be remembered that way? We need to ask our questions to ourselves. We need to understand that everyone don't get everything in life. हमारी कितनी भी इच्छाएं होंगी, सभी को सब कुछ नहीं मिलता है. So we don't need to be angry if we are not getting things in our life. We need to understand that we will get only what we has, what we deserve in our life. And we need to thank God that we are breathing. We are not dead. When we are so thankful and so humble in our mood, we will never get angry. And the last point, how to use anger effectively. आपने सुना होगा एक कहावत है कि जंगल में कभी कोई पेड़ काटने जाते हैं तो सबसे पहले कौन सा पेड़ कटता है? Can anyone answer this? Straight one. सीधे पेड़. Yes, exactly. जब भी कभी कोई पेड़ काटने जाता है तो बेचारा जो सीधा होता है वही पहले कटता है. तो बहुत सीधे हो गए तो लोग काटना शुरू कर देंगे आपको, तो बहुत सीधा भी नहीं रहना है. How do you use anger effectively in your life and at work? You have to be like this. Raise the hood but never bite. आपको एंगर उतना ही दिखाना है जितना जरूरत है. आपको इतना एंगर नहीं दिखाना है कि वो आपको तकलीफ पहुंचाए या सामने वाले को तकलीफ पहुंचाए. But we have to understand that the people to whom we are dealing with, they should not take you for granted. उतना ही एंगर करना है, ज्यादा नहीं. It should be in a very, very limited proportions. And that's how you use anger at home, at work, or at any situation. And this comes by practice. There's no set formula for this. This comes with practice. So that's all for today.
I'm really thankful to ICS team who has given this opportunity for sharing my thoughts here on this wonderful platform. I've been seeing, this Mr. Om Prakash Jindani has been after me since so many months that I should plan this, but unfortunately I've not able to do it. This time we got an opportunity and we did this. So I'm really thankful to ICS team. If you have any questions, I'm ready for that. Any questions? Any questions? Thank you, sir, for such an informative talk. Please put your question in the chat box, or you can unmute yourself and ask directly. Okay, no questions, no problem. Thank you, sir. Thank you very much. So I can disconnect now? Yes, sir. Thank you very Sir, much. Goodbye. So So Have a you wait, nice need day. wait. to just stop share your screen. Okay, we have got a question. What is the relation between man and buddhi? Okay, very good question, Sunil ji. The relationship between man and buddhi is, मन जो है वह ज्यादा इमोशनल रहता है और बुद्धि जो है वो हमेशा लॉजिकल रहती है. जैसे मैंने आपको डायबिटीज का एग्जांपल बताया, मन करता है कि आप मीठा खाते रहें, लेकिन बुद्धि कहती है बहुत ज्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, आपको डायबिटीज हो सकती है. लेकिन कभी कभी मन इतना स्ट्रांग होता है कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं और मीठा खाए जा रहे हैं. So in our life, in different situations, हम वह करते हैं जो हमारा मन कहता है. But then there has to be a balance, and we need to understand. We need to listen to our mind. हमें हमारी बुद्धि को सुनने में और उसका इम्प्लीमेंट करने में क्षमता डेवलप करनी होती है. और वह क्षमता कहाँ से आती है? मन को जो कंट्रोल करे उसको कहते हैं मंत्र. इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सारे मंत्र दिए कि हम वो मंत्र का जाप करें और हमारे मन को कंट्रोल कर पाए. I hope that answers your question, Sunil ji. Got it, sir. Thank you. Okay. Yes, I have some message from Dr. Kataria. Yes, sir, I'm listening. And I'm also seeing the chat box. Thank you very much, sir. Thank you for your compliment. And I would request all ICS team to keep going on with this wonderful job. This is definitely a very good platform to spread positive ideas in society and in business. Thank you, sir. Thank you very much. Have a nice day to all of you. Same to you. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hmm? Our next session on 10 September, which will be conducted by Mr. Surendra Patwardhan on management concept in Srimad Bhagavad Gita. We shall be covering Gita 5W and 1H. Key message from Gita on leadership and quality of person. Three types of done, concept of karma, Gita and management studies, principle of QMS and Gita, followed by question and answer session. Now officially close this session. Thank you all.